Yeah. Lordship, the witness is filing this petition by challenging the ordinance dated 8th of March 2019 and amendment dated 14th of August 2019, whereby Your Lordship, the reservation of OBC has been increased from 14 to 27%, Your Lordship. And Your Lordship, petition is also challenging the advertisement of the scientific officer issued. What are you challenging? My Lord, the reservation of OBC has been increased from 14 to 27%. My Lord, the petitioner is challenging the ordinance and gazette notification, Your Lordship. And also he is challenging the recruitment process which has been given in the advertisement of scientific officer, whereby, Your Lordship, 27% reservation has been given to the OBC, Your Lordship. Even after the orders has been passed by this court, Your Lordship. Yes, my lord. Listener, यहाँ पर my lord. Your Lordship, similarly, Your Lordship, my Lord. Who are you? I am for state, my lord. Huh? I am for state. Especially engaged state also along with. Granting interim order in all these cases. My lord, my submission. No? Are you ready? Are you arguing on Yes, merit? madam. Yes, madam. I am ready. इसमें my lord petitioners जो चाह रहे हैं अनेक फी तौर जो कोर्ट का ऑर्डर है 19/3/2019 का. Yes. इस पिटीशन में my lord जो 19/3/2019 को ऑर्डर पास हुआ है उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ. This petition has been filed challenging the Madhya Pradesh Ordinance number 2/2019 by which reservation to the OBC category has been increased from 14 to 27% apart from 16% reservation to the scheduled caste and 20% for scheduled tribes already has been prescribed under law. It is alleged by the learned counsel for the petitioner that as a result of the aforesaid, the statutory prescribed reservation has gone up to 63%, which is constitutionally impermissible, my lord. यहाँ पर टोटल जो रिजर्वेशन हो रहा था मतलब 63% हो रहा है. ये मार्च 2019 का है. जुलाई 2019 में मेरा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देने से टोटल जो रिजर्वेशन हो रहा है 73% हो रहा है मेरा. वो इसमें चैलेंज नहीं किया गया. तो इनका विज्ञापन हो देखा जाए P1 को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी इसमें है, उसको अब चैलेंज नहीं किया गया. मतलब विज्ञापन में ओबीसी का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी जब ऑर्डर पास हुआ था उस समय ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं था. मतलब P1 मेलड जो पेज 16 से शुरू होता है, पेज 17 पे मेलड इसमें दिया है यू आर शेड्यूल कास्ट SC ST OBC और ईडब्ल्यूएस. यहाँ ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन यहाँ पर मेलड दिया गया है. यहाँ पर इसको चैलेंज नहीं किया गया इसमें. दूसरी बात मेरा सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा साहनी के केस में डिसाइड किया है कि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाना विद इन रीजनेबल है, मेरा रीजनेबल लिमिट है, और वो मैं साइड करना चाहता हूँ मेरा. और दूसरा बात, इंदिरा साहनी के केस को पिटिशनर्स रियलाई कर रहे हैं. तो इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात 50% मैक्सिमम लिमिट निर्धारित किया है. 50% अधिकतम लिमिट के साथ ये भी कहा है कि आपवादिक परिस्थितियों में 50% से ज्यादा हो सकता है. और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये भी कहा है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन गलत है, स्ट्राइक डाउन किया मैंने. मैं वो पैरा बताना चाहता हूँ जहाँ पर ईडब्ल्यूएस को स्ट्राइक डाउन किया है. But last time you argued all this time. मैंने In the previous case. नहीं मैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने कंसीडर नहीं किया गया जो मैं अभी रिजर्च कर रहा हूँ. Last I think 2 weeks back same matter had come. You argued. माय लॉर्ड के सामने मैं ये आर्गुमेंट किया मैं. इसे फर्स्ट टाइम. Yes. माय लॉर्ड ये जो है इंदिरा साहनी के केस जो है मेरा 1992 सप्लीमेंट्री वॉल्यूम 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 217 शुरू होता है मेरा. इसके पैरा नंबर 807 में 807 में जो सुप्रीम कोर्ट का है उसमें रीड करना चाहता हूँ. We must house in all similar matters we are passing the same order. If at all the government is aggrieved, you can always challenge these orders in Supreme Court. And this is not the first time we are passing this order. We have been doing it for the last so many years. From 2000, the original order is passed in 2019. Have you challenged any of those orders? My lord, Have you challenged any of those orders? My lord,
वो जो ऑर्डर थे उसमें वही बताना चाह रहा हूँ, उस समय परिस्थितियां बदल चुकी हैं और अभी लेटेस्ट जजमेंट भी हमारा सुप्रीम कोर्ट का 7 जनवरी 2022 का, उसमें I think you don't understand. We'll ask the question once again. The interim order was granted as far back as in 2019. All subsequent interim orders are based on that. So have you challenged any one of those orders before the Honorable Supreme Court? नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई चैलेंज नहीं किया गया है। Then why we should go on hearing you again and again on the same? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 19/3 का था उसमें परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का जो क्योंकि ये इंदिरा साहनी के जजमेंट के आधार पे माननीय न्यायालय ने ये ऑर्डर पास किया हुआ है। मतलब similar order has been supplied to us. मेरा निवेदन ये है कि मेरा जो कंटेंशन मतलब वो रिकॉर्ड पे ले, जो मैं जो बता रहा हूँ उसको ये कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा उसको हमारे रिकॉर्ड पे ले लिया जाए। दूसरा बात ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट डिसाइड किया हुआ इसको मैं साइड करना चाहता हूँ, इसको भी कंटेंशन पे ले अभी हमारा लेटेस्ट 7 जनवरी 2022 को भी लेटेस्ट ऑर्डर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन को सही माना है। तो मत लिया था इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो है ओबीसी के 27% को अभी हमारा 7 जनवरी 2022 को जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है इसमें ओबीसी रिजर्वेशन 27% मैंने सही माना हुआ है। इसके पेज नंबर 4 पे देखा जाए मिनट, इसमें जो लास्ट में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है पैरा 7 में पेज नंबर 4 पे मिनट 7 में फर्स्ट वी accept the recommendation of the Pandey committee that the criteria which has been stipulated in OM 2019 be used for 2021 and 2022 in order to ensure that admission process is not dislocated. Second, counseling on the basis of NEET PG 2021 and NEET UG 2021 shall be conducted by giving effect to the reservation as provided by notice dated 29 July 2021, including 27% reservation for OBC category and 10% reservation for EWS category in all India quota seats में। तो मेरा इसमें जो सेकंड पॉइंट है इसमें मेरा यह है कि माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इसको 27% को सही माना हुआ मेरा यहाँ पर। और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के समय जो 50% का मेरिट मराठा रिजर्वेशन में जो ऑब्जर्वेशन किया मेरिट मैं उसको कोट करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। मराठा रिजर्वेशन एससीसी वॉल्यूम 8 पेज नंबर मेरिट 1 से शुरू होता है। मैं रीड करना चाहता हूँ पैरा नंबर 443 पे मेरिट। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है इसमें कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बाद 103rd अमेंडमेंट के बाद 50% की सीलिंग लिमिट दूसरे केसेस में डिसाइड किया जाएगा, तो उसके अस्तित्व को मैंने नहीं माना है यहाँ पर। तो ये जो 2019 से जजमेंट चला रहा था मेरा, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के जो लेटेस्ट जो जजमेंट है उससे अगेंस्ट जा रहा है। मेरा कंटेंस है मेरा सबमिशन है ये यहाँ पर लिया जाए मेरा। और मैं इसको पढ़ देना चाहता हूँ 443 पैरा नंबर 443 मेरा जो मराठा रिजर्वेशन केस में आया है। Sirotogi submits that judgment of Indira Sahni held that the state cannot identify the backward classes solely on the basis of economic criteria as Indira Sahni has been set aside the OM dated 13/8/1990 which provide 10% reservation to the economically weaker sections. The submission of Sri Rohtogi is that by the 103rd constitutional amendment, Parliament has inserted Article 15(6) and 16(6), whereby 10% reservation is granted to the economically weaker section. Agla parameter. It is submitted that in view of 10% reservation as mandated by 103rd constitutional amendment, 50% reservation as laid down by the Indira Sahni is breached. Sri Rohtogi has further submitted that the issue pertaining to the 103rd constitutional amendment has been referred to the larger bench in WP number so and so, Janhit Abhiyan versus Union of India. In view of above, we refrain ourselves from making any observations regarding the effect and consequence of 103rd constitutional amendment.
मतलब 103rd अमेंडमेंट के बाद 50% की जो ब्रीच हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं कहा है मैडम कि 50% ज्यादा नहीं हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन उसका जो 103rd का है मैडम, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में भी है। तो हमारा इसमें सबमिशन ये है मैडम कि 50% के ग्राउंड्स पे अब नहीं किया जा सकता, जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के साथ जब चल रहा है तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटल रिजर्वेशन यहाँ पर 73 हो रहा है। अगर 14 भी दिया जाता है ओबीसी को तो भी रिजर्वेशन जो है वैसे ही 60% हो रहा है टोटल परसेंट में इसको देने के बाद भी। तो 50% की सीलिंग लिमिट अब नहीं बची हुई है, इसलिए उसके आधार पर कोई इंट्रीम ऑर्डर अब नहीं दिया जा सकता है। ये मेरा सबमिशन है। और इंदिरा साहनी के केस में जो पैरा नंबर 810 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है मैडम, बताना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में 50% ज्यादा हो सकती है। वाइल मैडम मैं पढ़ना चाहता हूँ, वाइल 50% shall be the rule, it is necessary not put out the consideration certain extraordinary situations inherent in the great diversity of this country and the people. It might happen that in far-flung and remote areas, the population inhabiting those areas might, on the account of their being out of the mainstream of national life and in view of conditions peculiar to the characteristical to them, need to be treated in a different way. Some relaxations in this strict rule may be imperative. In doing so, extreme cautions is to be exercised and special caution made out. तो मेरा कहना है मेलट कि मध्य प्रदेश में चूंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसको ये जो फार फ्लंग्स एंड रिमोट एरिया वाली बात है यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठा मध्य प्रदेश के लिए। ये इसलिए यहाँ पर ये मानना जाना चाहिए। और 50% की सीलिंग लिमिट जो इंदिरा साहनी का केस करता है वो खुद ही कह रहा है कि इसमें नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर एक कंसीडर भी किया जाए मेरा, वहाँ पर नहीं कंसीडर किया गया, उस समय बात नहीं रखी जा पाई थी जब ये पहले ऑर्डर पास किया गया था मेरा। तो मेरा एक सबमिशन मेलर की इस कंटेंशन को मेरे रिकॉर्ड कर लिया जाए मेरा। Take down. Third, Shri so-and-so, the counsel petitioner and Shri so-and-so, the government advocate appearing for respondents 1, 2, 3. Public service, okay? The learned counsel of the petitioner contends that the subject matter involved herein is similar to the one that is being considered by this court in a series of writ petitions, as in 5901 of 2019 and connected matters, wherein the ordinance providing reservation for 27% for OBC has been challenged. That in the order dated 19/3/2019, passed WP 5901 of 2019, an interim order has been granted directing that the respondent shall not provide reservation of more than 14% for OBC category. That the petition herein is similar in nature, except that the posts involved herein are that of the recruitment for the post of scientific officer. The same is disputed by Shri so-and-so, learned counsel appearing for respondent 1 to 3. He relies on the judgment of the Honorable Supreme Court in the case of Indira Sahni and others, as well as the order dated 7/1/2022, passed by the Honorable Supreme Court in WP 961 of 2021. The case of Neil Arola versus Union of India and others. Hence, he pleads that no interim order be granted. This court, right from the year 2019, has been granting stay of reservation beyond 14%. All the matters are pending adjudication. None of the interim orders, on a specific question being asked, the learned government advocate submits that none of the interim orders granted by this court have been challenged before the Honorable Supreme Court. Is that correct? Yes, correct. That they have been accepting all the interim orders being granted by the court. Therefore, we fail to understand how objections are being made only so far as this particular petition is concerned. Therefore, in view of the similar orders being granted, the petitioner is necessarily entitled for the same relief
as the other writ petitioners have been granted. Consequently, it is directed that the respondent shall not provide reservation of more than 14% for the OBC category. With respect to the recruitment, the post of scientific officer, कहाँ पे? FSL. हाँ? FSL, Forensic Science Laboratory, Forensic Science Laboratory, मध्य प्रदेश में, Malot. भोपाल. Malot. कहाँ है ये? MP, Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश. Home Along Department. with 5901 of 2019. Three, so and so, the council appears for respondent number 4. मेरा एक सबमिशन रिकॉर्ड नहीं आया, मेरा निवेदन था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में 27% को सही माना है मेरा, ये भी रिकॉर्ड में आ रहा है कि ओबीसी को जो 27% दिया गया इंदिरा साहनी मैंने इसको लिंक कर दिया 5901 के साथ लिंक कर दिया जनाब. आपने सुना नहीं क्या जो ऑर्डर किया? सॉरी. My lord, in this, I have moved an application for amendment. That may kindly be taken. What amendment? This is about, my lord, my representation have been rejected. Huh? My representation was pending, my lord, which has been rejected on